child because the multiplication of the cells occur and the increase intracellular substance. While if I want to define the development means the mental part of the child is growing, the skills and the function. So both part are grow together. So that's why we are saying the growth and the development. When the baby is born, so we need to check the baby physically and the mentally as well as. So this is the definition of the growth and development. And growth monitoring, we will watch out, we will check the progress of the child physically and the mentally. Okay, so the normal growth and development take place if the nutrition is the proper, if the child doesn't have any infection, if the child doesn't have any genetic influence of the problem, if the child is freedom from the environmental influences, so many environmental influences that will affect on the growth and the development. If the economy of the country or the economy of the family, the socio-economic status of the family is good, then the growth and the development take place normally. If the economy of a family or the overall the country status is low, then that will affect on the growth and development of the child. Okay, now look at that picture. This is how the baby is growing in the first year. He will start the crawling and then walking the second year, so he's moving more physically, third year, fourth year, and the fifth year. So the growth and development is important up to the fourth year because so many problems occur under the 5 years of the age. That's why we are monitoring the growth of the child, the physically and the mentally. Okay, so how children grow? So the what is the normal the birth weight of the child in different the developing countries. Every countries have the own birth weight, average birth weight. So that is a that is about 2.7 and 2.9 kg. While in the Pakistan the normal birth weight is a 2.5 kg. In the developed countries, the normal birth weight is a 3.5 kg. In Pakistan is a 2.5 kg. If the birth weight is below the 2.5 kg, we will call the low birth weight. It means the nutritional status of the mother and the child is not good. So different reasons of the low birth weight. So this is a nutritional public health problem. Okay, so most rapid at the younger age. So the child grow rapidly at the younger age, especially during the first year of the life. Okay, so growing period is more or the rapid during the first year of the life. A baby should gain at least 500 gram weight per month in the first 3 months of the life. Okay, जो initially month होंगे baby के after the uh, baby come into the world, तो उसमें जो weight होना चाहिए that should be a 500 gram should be increased in every 3 months. Okay, so on an average, a healthy baby double his birth weight by 5 months. जो 5 महीने तक उसका जो वजन हो जाएगा वो डबल हो जाएगा. Triple it by end of the first year and the quadruple by the age of the 2. तो वो ऐसे मल्टीप्लेक्शन हो रही है वेट की, जैसे ही एज इंक्रीज हो रही है सो वेट इज आल्सो इंक्रीजिंग. So this is the normal, how children grow. If there is a problem, if there is a problem of the nutrition, if there is a problem in the growth, then the weight, the child or the baby cannot, improve or they gain the weight normally. Okay, for example, if the growth slows or the stop, we say the term we are using the growth falters. Actually, this is a sign that something is wrong with the child and must be discovered at earliest and set right. Because if the growth is stopped, if the growth falter happen, it means something is wrong going on with the baby. So we need to pay attention to the child to identify the causes why child is not growing. So it can be said the growing child is a healthy child, and equally true that child who's not growing is not healthy. Child grow, it means healthy. If the child is not growing, that it means not healthy. Something is wrong. So we need to identify the cause and prevent that cause also or the treat that cause. Okay, so the most accurate and sensitive, how we will measure the,
how we will measure the the growth of the child through the weight gain. So weight gain, this is the single the parameter, and that is a sensitive parameter through which we are checking the growth and the development of the child. So that is a weight gain. अगर weight बढ़ रहा है, it means baby is growing and baby is healthy. अगर weight कम होगा तो उसका क्या मकसद है कि कोई प्रॉब्लम है जो बच्चे में हो रहा है, कोई भी रीजन हो, उसकी वजह से कोई इन्फेक्शन हो सकता है, माल न्यूट्रिशन हो सकती है जिसकी वजह से वेट नहीं बढ़ा, हो सकता है कोई जेनेटिक रीजन हो या कोई इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंस हो, उसकी वजह से वेट नहीं बढ़ा, तो वी नीड टू फोकस ऑन दैट काज. तो weight gain, that is a single the sensitive measure of the growth. ये you should remember that one, weight gain. मेन चीज वही होती है, जैसे ही बच्चा पैदा होता है तो हम वजन चेक करते रहते हैं, वीकली, मंथली. Okay, so that is a growth monitoring. The watch out or the checking of the child growth through the weight, surveillance of the growth and the monitoring. Monitoring means keeping a regular. Okay, that is a definition of the growth monitoring. That is a proper definition of the growth monitoring. So, tracking of something like every week or every month. तो इसमें क्या होगा, जैसे ही बच्चा पैदा होगा तो उसका हम वीकली मॉनिटर करेंगे वेट कि बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा है, उसमें कुछ चेंजेस आ रही हैं, वेट में आ रही हैं नहीं आ रही हैं. और उसके बाद हम मंथली करेंगे, जैसे ही एज इंक्रीज हो जाएगी फिर यहाँ every third month we check करेंगे. So that is a certain protocol, we need to follow that one. So the regular checking of the weight of the baby, so we can monitor the changes in the weight. Okay, so moving on, that is the same. It is a change in the weight over a period of time, which is most important rather than the weight itself. बेसिकली क्या होगा, जैसे ही बच्चा पैदा होता है तो उसका हम बर्थ वेट देखते हैं. उसके बाद क्या होगा कि ये हमने सिंगल रीडिंग ले ली बर्थ वेट की. उसके बाद हम जैसे ही वीकली चेक करेंगे, मंथली चेक करेंगे, दैट इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज वी कैन सी द ट्रेंड ओवर पीरियड ऑफ द टाइम. अगर हम ट्रेंड नहीं देखेंगे तो हमें पता नहीं चलेगा कि भाई वेट जो बेबी ग्रो हो रहा है नहीं हो रहा है, वेट सेम ही जा रहा है या कम हो रहा है या ज्यादा हो रहा है. सो वी कैन आइडेंटिफाई थ्रू द ट्रेंड ऑफ द वेट रीडिंग ओवर द पीरियड ऑफ द टाइम. अगर हम एक रीडिंग लेंगे वेट की तो उसका कोई एडवांटेज नहीं होगा. कंटिन्यूसली हमें रिपीटेडली लेनी चाहिए, एवरी वीक और एवरी मंथ. Okay, for example, should be done once every month up to the age of the 3 years and at least once in a 3 month thereafter. ठीक है, ये एज के हिसाब से दिया हुआ है कि भाई अगर 3 साल का बच्चा होगा, 3 साल तक हमें एवरी मंथ उसका चेक करना है वेट. और वो अगर फॉर एग्जांपल एटलीस्ट वंस इन 3 मंथ देयर आफ्टर, उसके बाद हमें 3 महीने के बाद उसका वजन चेक करना पड़ेगा. सो दैट इज अ काइंड ऑफ गाइडलाइन टू चेक द वेट आफ्टर सर्टेन टाइम, आफ्टर सर्टेन ड्यूरेशन, so that we can see the trend of the weight changes. Okay, now the why we are discussing the growth monitoring, why we are checking the weight of the baby every week or every month. Growth is a most sensitive indicator of child health. Normal growth only occurs if the child is healthy. Normal growth take place if the child is healthy. So this is a sensitive indicator. Growth assessment is an essential part of examination or investigation of the child. फॉर एग्जाम्पल अगर कोई कुछ भी बेबी को हो रहा है, चाइल्ड को हो रहा है, दैट इज अ पार्ट ऑफ द चाइल्ड हेल्थ. अगर आप पीडियाट्रिशियन के पास जाओगे तो वो ही विल मस्ट वॉच द ग्रोथ ऑफ द बेबी और द चाइल्ड. Okay, that will allow detection of the growth disorders at population level at earliest opportunity. We can identify the problems earlier at community level, at the population level. It help in early identification, the treatment of the growth disorder, which improve outcome. Definitely, if we will identify the problem early, then we can overcome that problem early and the child will be healthy. It identify the under or the over nutrition. Under nutrition means the malnutrition, and the over nutrition. अगर weight बढ़ेगा तो we can identify something is wrong with the baby. Maybe the baby will get the obese in the future. अगर under nutrition हो रहा है, it means baby's diet is not taking the properly, so we need to focus on that diet also. Sometime we are identify the feeding problem, breastfeeding problem. वो प्रॉपर बच्चा दूध नहीं पी रहा माँ का, तो उसकी वजह से he will go under nutrient. So these are the purposes why we are checking the, why we are monitoring the growth.
ओके नाउ डेफिनेटली अभी हम कैसे करेंगे सर्टन मेथड्स फॉर मॉनिटरिंग द ग्रोथ। उसमें हम क्या करेंगे, वेट फॉर एज, वी नीड टू चेक द वेट फॉर द एज, height, length for the age, also that is important, weight for the height. Okay, so these are the methods, the parameters, devices through which we will, assess the growth of the baby. Okay, the head and the chest circumference. Okay, that will also we will look into the head and the chest circumference. अभी इसमें क्या होता है कि that one thing I want to tell you, before telling the methods of the monitoring, उसको हम क्या करेंगे, बेसिकली पहले WHO हैज डिड द रिसर्च, जो एक नॉर्मल जो ग्रोथ होती है, डेवलपमेंट होती है बेबी की, सो एक्चुअली दे डिड द रिसर्च ऑलरेडी, सो दे मेक द रेफरेंस स्टैंडर्ड। उन्होंने पहले से ही एक रेफरेंस स्टैंडर्ड बनाए हुए हैं कि भाई अगर बच्चे की उम्र 2 महीने होगी तो उसका इतना वेट होगा, अगर 1 साल उम्र होगी तो उसका इतना वेट होगा। सो दे ऑलरेडी प्रिपेयर द चार्ट्स, व्हाट वी आर कॉलिंग इज अ ग्रोथ चार्ट। तो एक स्टैंडर्ड वो बना हुआ है सारा कि भाई ये नॉर्मल डेवलपमेंट होगी बच्चों में, ठीक है। तो अभी जो ये तो एक पहले से रिसर्च की हुई है, चार्ट्स बने हुए हैं, रेफरेंस स्टैंडर्ड हमारे पास हैं। अभी जैसे बच्चा पैदा होगा, तो अभी जो बच्चा पैदा होगा तो उसका हम जैसे ही वेट नोट करेंगे तो उसके साथ कंपेयर करेंगे कि भाई उसके साथ वो मैच हो रहा है नहीं हो रहा है। अगर मैच नहीं हो रहा है, इट मीन समथिंग इज रॉन्ग विद द चाइल्ड, ठीक है। सो आई थिंक आई होप यू आर गेटिंग दैट पॉइंट। इसके बगैर यू कैन नॉट अंडरस्टैंड द monitoring, the growth monitoring. Okay, now let us discuss one by one, the method of growth monitoring. The first we will discuss the weight for the age. Okay, so the age के हिसाब से weight उसका बच्चे का कितना होगा, so that we can assess the physical growth. Okay, so the weight for age, the single best parameter for assessing the physical growth, that is important. We need to check the weight, otherwise how we can know about the physical growth. Okay, so this is a careful repeated measurement at interval, ideally from birth to the 1 month. अगर बच्चा अभी पैदा हुआ है और 1 महीने तक उसका वीकली हम वेट चेक करेंगे। अगर ये 1 मंथ टू द 3rd ईयर तक हम अच्छा ये देखें, फ्रॉम 1 मंथ टू द अप टू द 3rd ईयर, सो वी विल चेक एवरी मंथ, सो वी विल मॉनिटर द वेट, हर महीने उसका हम चेक करेंगे वेट। Okay, from 3rd ईयर अप टू द 5th ईयर एट एवरी 3 मंथ। अगर उसकी एज 3 साल है तो 3 साल से हम स्टार्ट करेंगे 5 साल तक, एवरी 3 मंथ इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, सो वी विल चेक weight every 3 months. So compare these measurement with the reference standard. I told you the reference standards already made are already done by the WHO of the weight of the children of the same age. So based done on the growth chart, what we are calling that is a growth chart already prepared, already researched by the WHO, and we should have in our hand. After that, we will compare with these growth chart to assess the weight changes. Okay, now the moving on the second part, the second method. Other method is a height or the length for the height is also important. Height should be taken in a standing position without footwear, with the help of the height machine or the measuring scale fixed to the wall. Okay, standing position में लेनी चाहिए बच्चे की फुटवियर के बगैर। Okay, suitable for 2 years are the children और अब ये जो 2 साल के बाद अप्लाई हो सकती है, before 2 years we cannot check the height. Okay, so after the 2 years, so under the 2 years, we will check the weight. The length of the baby at the birth is about 50 centimeter. Okay, it increases about the 25 centimeter during the first year and by another 12 centimeter during the second year life. Initially, उसकी 50 centimeter height होती है. After that, that is increased about the 25 centimeter, followed by the 12 centimeter in the second year. Okay, so this is about the height for the age. Okay, now the what is difference between the height and the weight? Actually, the height is a stable measurement of the growth, while weight is not a stable measurement of the growth. Okay, another difference between the height and the weight, the method, the height indicates the events in the past. Weight is reflecting only the present health status of children. Weight जब हम check करते हैं, so we can only see the present status of the child, while through the height
we can know the the previous, we can know about the previous events. जैसे जो मदर की malnutrition कैसी थी, वो सही थी या नहीं थी, अगर वो मदर हेल्दी होगी ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी तो बच्चा भी हेल्दी होगा. सो दैट वन वी कैन नो थ्रू द height. Low height for the age, also known as a nutritional stunting or the dwarfing, reflect the past or the chronic malnutrition. So that is the difference between the height and the weight. Okay, now third component of the method of monitoring is the weight for the height. So weight and height, we will see the weight and the height. Weight and height are interrelated. If there is a low weight for the height, it is called nutritional wasting or the acute malnutrition. उसमें wasting हो जाती है acute malnutrition में, low weight for the height. A child less than 70% of the expected weight for the height is classed as a severely wasted. So that is another advantage of the weight for the height parameter. So we can identify the nutritional wasting and the acute malnutrition through the weight for the height. Okay, now this is about the head and the chest circumference. Okay, so we need to monitor the circumference, head and chest as well. At birth, the head circumference is about 34 centimeter, about 2 centimeter more than the chest circumference. जो हेड की होती है, जब बच्चा पैदा होता है तो उसमें उसका ज़्यादा होता है circumference as compared to the chest. By the age of 6-9 months, these two measurements become equal. Head and chest circumference equal हो जाती हैं at the age of the 9 month. Afterward, the chest circumference overtake. 9 month के बाद क्या होता है, नॉर्मली क्या होता है कि chest circumference होती है वो बढ़ जाती है as compared to the head. So this overtaking may be delayed. ये जरूरी नहीं है कि नॉर्मली ये ओवरटेकिंग होती है, चेस्ट सर्कमफेरेंस बढ़ जाता है एज कम्पेयर टू द हेड. बट क्या होता है कि मालनस जो चिल्ड्रन होते हैं उसमें ये प्रॉब्लम हो जाता है कि चेस्ट कैन नॉट ओवरटेक द हेड सर्कमफेरेंस. So that is also sign. So we can identify something is wrong with the child. So we need to take the early intervention. So that is actually happening in the malnourished children, or the the children, they are not eating properly, especially severely malnourished children. Okay, now look at that picture. Okay, when to start growth monitoring and how often? Little bit I told you earlier. So when we should start the growth monitoring, जैसे ही बच्चा पैदा होता है, we supposed to start the growth monitoring, and how often और कितने कितने time के बाद. Actually that picture I want to show you. This is about the growth chart. Later I will tell you about how you will interpret the growth curve. Okay, so the growth monitoring must start at early age in the child life, right from the birth. Okay, that one agree. Yeah, that one I told you. The health worker should check the weight of all newborn and the children from birth to the 1 month. अगर बच्चा birth पैदा हुआ है 1 महीने तक, उसका हम weekly weight check करेंगे. ठीक है, अच्छा 1 month, 3 years every month. अगर 1 महीने का और वो 1 महीने के बाद जो हम चेक करेंगे अप टू द 3 years, वो एवरी मंथ उसका वेट चेक करेंगे. अच्छा, ये जो 3 साल से आगे अप टू द 5 years, वी विल चेक द वेट एट एवरी 3 month. तो ये डेफिनेटली रिपीटेडली वी नीड टू चेक द वेट डिफरेंट एज ग्रुप्स. Okay, so the children who are severely underweight, who have not gained weight for the 2 months, who are at the risk of the undernutrition, should be weighed frequently, preferably every month. अगर ये तो actually that one I told you, the normal, the growth and development if take place, then we need to check the weight, from birth to the 1 month weekly, or yeah, every month, up to the 3 years. But अगर problem है बच्चे को, if the baby is already suffering from the malnutrition, then we need to check, every month. तो वो जो एक criteria होगी normal, that will be, we shouldn't follow, we will follow the checking weight regularly if the baby is suffering from, child is suffering from the malnutrition. Okay, so the golden, the principles of the new WHO growth chart, growth standard, weighing and plotting the weight of the children on the basis of completed weeks in the month. हमारे पास growth chart है, reference standard है. अभी जैसे बच्चा आया नया, उसका हम वेट चेक करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, उसका जैसे ही उसका फॉर एग्जांपल 1 महीना पूरा हो गया, हम वेट चेक करेंगे, उसके बाद जो ग्रोथ चार्ट में उसको डॉट उसको करेंगे, टिक करेंगे कि भाई इसकी एज इतनी है, इसका इतना टाइम हो गया, 1 महीना हो गया, अभी इसका वजन ये है. तो वी विल व्हाट वी विल डू, वी विल डॉट ऑन द ग्रोथ चार्ट.
वो पहले से ही उसका किया हुआ है। तो उस जैसे ही उसका वेट हम चेक करेंगे, हमें पता चलेगा ना 1 2 3 4 महीने के बाद कि भाई वो जो कर्व है वो अपवर्ड जा रही है या डाउनवर्ड जा रही है। तो उसमें क्या होगा आगे चल के कि बच्चा वाकई रियली ग्रो कर रहा है या ग्रो नहीं कर रहा। सो दैट कैन वी कैन अप्लाई एट द बेसिक हेल्थ यूनिट। ये जो हेल्थ वर्कर्स होती हैं, लेडी हेल्थ वर्कर्स हैं या जो और हेल्थ वर्कर्स होती हैं, actually this one, the growth and development or the growth monitoring, that is a part of the maternal child health care। जैसे हमारे पास एमसीएन सेंटर नहीं होते जहाँ पे माँ और बच्चों का ख्याल रखा जाता है, एक्चुअली दैट इज अ पार्ट ऑफ द मैटरनल चाइल्ड हेल्थ केयर। ओके, सो नाउ द स्टेप्स इन द ग्रोथ मॉनिटरिंग। Okay, so now the steps in the growth monitoring. The first step is we need to determine the correct age of the child. That is also important. Sometimes even in the rural area, remote area, the family they don't know the exact age of the child. Okay, so the accurate weight of the child. Okay, that is also important. Without that one, we cannot check or monitor the growth of the baby. Okay, accurate weight we need to monitor. Step three, the plotting the weight accurately on the growth chart of the appropriate gender. Basically, we have the different growth chart for the different gender. For the boys is a different growth chart. For the females is the different growth chart. So उसको हम प्लॉट करना चाहिए, पॉइंट करना चाहिए प्रॉपरली। ऐसे ना हो कि वो मेल का वेट चेक करें और फीमेल वाले ग्रोथ चार्ट पे हम पॉइंट कर लें। So interpreting the direction of growth curve and recognizing if the child is growing properly, वो curve जो बनेगी definitely we need to identify that one. Otherwise, how we can know okay baby is doing growth properly or not. The step 5, the discussing the child growth follow up action needed with the mother। डेफिनेटली अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आ रहा है ग्रोथ चार्ट में, ग्रोथ चार्ट के थ्रू हम अगर इंटरप्रेट करें उसमें कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो उसके मदर के साथ हम डिस्कस करेंगे और उसका हम बताएंगे कि भाई ये प्रॉब्लम आ रहा है बच्चे में। तो उसका हम डाइट देखेंगे, ठीक है, वो किस तरह से बच्चे को रेज कर रही हैं, तो उसको थोड़ा हम एडवाइस करेंगे, काउंसलिंग करेंगे। सो दैट इज डन इन द मैटरनल चाइल्ड हेल्थ केयर सेंटर। सो दीज आर द 5 स्टेप्स फॉर growth monitoring। Okay, so age, that is also important. We need the correct age of the child. If the child is age not known correctly, it is not possible to assess the growth of the child and have an accurate growth chart। अगर age उसका प्रॉपर हमें पता नहीं होगा तो उसका हमें पता नहीं चल सकेगा ना कि भाई किस तरह से, क्योंकि वो जो पहले से एक रेफरेंस स्टैंडर्ड हमारे पास है, इसमें अगर एज हम ज़्यादा लिखेंगे भी प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि वो उसके हिसाब से जो रेफरेंस स्टैंडर्ड होगा ना पहले बना हुआ, वो एज वाइज पहले बना हुआ है कि भाई इस एज में बच्चे का इतना वजन होना चाहिए। अगर हम ज़्यादा एज लिखेंगे तो वो भी उसमें हमें प्रॉब्लम होगा। अगर कम एज लिखेंगे तो वो जो चार्ट होगा ना उसके साथ नहीं मैच हो सकेगा और हमें गलत रिजल्ट मिलेंगे। Okay, so for example, many people, many mothers, if they don't have the birth record, तो उसमें हम कैसे करें assess, age of the child with the help of the birth certificate in Pakistan? Actually, we are not, preparing the birth certificate, or the community is not taking the birth certificate. तो वो उसका मदर से ही पूछना पड़ेगा। From the mother, if she remember the exact date of the birth, okay, using the local event calendar. So these are the, the technique through which we can, assess the age. So ideally, we should know the age. Otherwise, we cannot, follow the growth of the baby properly. Okay, so these are the, the weighing of the infant and the children. Okay, so the two types of the scales are being used in the maternal child health care for the weighing of the children, the bar scale in the Salter or the dial type scale. So now so many new, the weighing machines are available for monitoring of the growth of the child. Okay, that one I want to show you the picture. This is the, the Salter weighing scale that is a commonly used. Okay, moving on another, the bar weighing scales. Okay, look at that picture. So this one, old method. So still, people are checking the, the baby's weight on these, devices. So this is a bar weighing scale. Another is a Salter weighing scale. Okay, so the growth charts that is already prepared, that is already made by the WHO.
actually there is the importance of the growth chart. So we can, through growth chart, we can, this is the tool, this is the screening tool, this is the device through which we can identify the, nutritional status of the children. So these growth chart we can use for the research also. And these are the already, prepared. The consist of the series of the percentile curves that illustrate the distribution of selected body measurement in the study population. Indicate the state of the child health, nutrition, और उसमें पता चलेगा कि वेल बीइंग है बच्चा या अंडर न्यूट्रिशन है. Okay, so look at that one picture. This is about the growth chart, WHO growth chart. Okay, wait for the age girl. So these are the, the curves, the already, mentioned according to their age. So we need to identify plotting the weight of the new baby. यहाँ पे हम उसको टिक करेंगे, पॉइंट करेंगे कि भाई ये बच्चे का 1 महीना हो गया है, उसकी उम्र ये है, तो ये उसका वजन ये है. वजन जो हम चेक करके यहाँ पे पॉइंट करेंगे. सो 5-6 महीने के बाद में पता चलेगा, स्टार्ट से ही पता चल जाता है, 5-6 महीने बाद पता चलेगा कि भाई क्या रीजन है. सो एक्चुअली दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ द growth chart. So this is a screening tool, so we can detect the malnutrition, obesity problem, overweight problem. We can sensitize the health worker. Oh, that is, very easy method for the, especially the health workers who are working in the basic health unit, to identify the, you know only by checking the weight we can identify the growth problem in the baby. Okay, this is, the sample of, the growth chart. These are available in the maternal child health care. Okay, for the boys growth chart is a different, for the girls is a different charts. Okay, so this is the growth curve. Okay, that one I want to tell you about the growth curve. Okay, follow the cursor. Okay, now you can see the direction of the growth curve. This is a picture. If the, the upward curve, if the curve, now for example, if this is the one dot, we check the weight, another dot, third dot, and the fourth dot. Okay, if we will, now we will form the curve. If the curve is going upward, it means the good. Baby is in a good health. अगर हम ये हम वजन चेक करते हैं, बच्चे का ये आ रहा है और उसके बाद सेकंड डॉट ये आ रही है और ये फ्लैट कर्व आ रही है, इट मींस समथिंग इज रॉन्ग और द डेंजरस विद द बेबी, क्योंकि वो ग्रो नहीं कर रहा, अपवर्ड कर्व नहीं जा रही. वजन बढ़ना चाहिए अकॉर्डिंग टू द एज, जो रिसर्च की हुई है, जो हमारे पास स्टैंडर्ड है, वो बढ़ नहीं रहा, तो फ्लैट कर्व होगी, इट मींस समथिंग इज रॉन्ग विद द बेबी. अच्छा, अगर ये जो कर्व है, जो अभी ये देखें ना, ये डॉट्स हैं, ये डॉट्स कनेक्टेड हैं, ये डॉट्स इसका वजन किया हुआ है बेबी का. अब इस बेबी का वजन कम होगा और नाउ द ये जो कर्व बन रही है ये डाउनवर्ड जा रही है. इसका मकसद क्या हुआ कि भाई समथिंग इज वेरी डेंजरस. अभी देखें ना, वी आर मॉनिटरिंग द वेट, चेंजेस इन द वेट. ये जो डॉट्स हैं ये वेट है बच्चे का. ठीक है, ये जो बच्चे का वेट है जो हमने ये चार्ट पे रखी हुई है, तो चार्ट के हिसाब से उसकी जो कर्व बन रही है वो, अगर वो फ्लैट होगी तो डेंजरस है, डाउनवर्ड हो रही तो वेरी डेंजरस है. अगर वो अपवर्ड जाएगी, क्योंकि हम देखेंगे अपवर्ड जाएगा ना, वजन बढ़ता जाएगा एज के हिसाब से, वो नहीं बढ़ रहा, इसका मकसद है समथिंग इज रॉन्ग, कि भाई उसका न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम है या कोई और डिजीज है, कोई इन्फेक्शन तो नहीं हो गया. तो वो नीड टू आइडेंटिफाई अर्ली. तो पर्पज यही है एक्चुअली, the growth curve ka or the growth chart ka, to identify problem in the baby early so that we can rectify that. अगर हम बच्चे को rectify करेंगे early problem, तो वो healthy रहेगा and he can survive or he can live longer. Okay, I hope you are understanding this one, direction of the child growth curve. So if you are visiting the hospitals, if you are visiting sometime, if you will find the chance to visit the maternal child health care, so you can see the growth chart. These are available in the maternal child health care center. Okay, now this one is a, the interpretation, decision of the growth curve, upward growth curve, flat growth curve, downward growth curve. That one I told you already, the interpretation. Okay, now the first part we have the finish. Now the second part, that is about the food fortification. Okay, so the food fortification, the definition, fortification means, we are adding extra nutrient to the food. Something, this is the process by which we are adding extra nutrient into the food for, control the nutritional problem in the community. Okay, so what we will call that will be the fortified food. Foods to which extra nutrients have been added. Now, according to the WHO, what is the proper definition of the food fortification? I will tell you the examples of the food fortification. Okay, so the food fortification is a process whereby nutrients are added to food in relatively small quantity
to maintain, improve the quality of the diet of the group or the community or the population. So this is the proper definition of the food fortification. At least you should know the, the definition of food fortification and examples of the food fortification. Okay, now I will tell you the examples of the food fortification. Now you can see this is the fluoridation. Fluoridation का मकसद क्या है कि जो फ्लोराइड है, फ्लोराइड होती है हमारे टूथपेस्ट में. Okay, this is the nutrient that is added in the toothpaste for the prevention and control of the dental caries. We use regularly toothpaste that contain the fluoride. Okay, sorry for interruption. Okay, so the fluoridation of the water is a preventive of the dental caries. So another method in the developed countries, not in the Pakistan. In Pakistan, we have add fluoride into the toothpaste for the prevention of dental caries. This is the example of the, fortification. Okay, in developed countries, they are adding fluoride into the water. Okay, जो water हम पी रहे हैं तो उन्होंने fluoride add किया हुआ है so that we can control the dental caries. Okay, another example, जो हम नमक खाते हैं, salt खाते हैं, so the the common salt, उसमें इन्होंने add किया हुआ है ये जो iodine. So the iodization of the salt for combating the problem of endemic goiter. ये goiter होता है ना problem, thyroid का problem हो जाता है, swelling हो जाती है. So to control, to prevent the thyroid problem, they have add the iodine into the salt. Now जो भी आपके घर में होगा, everybody is using the iodized salt, iodine मिला नमक. Okay, so another example of food fortification is the vanaspati or the milk with the vitamin A and the D. ओके, सो पहले हम घी खाते थे तो उसमें एक्चुअली दे आर फोर्टिफाइंग द विटामिन ए एंड डी, तो ये टू प्रिवेंट द बोन प्रॉब्लम्स, और उसमें इम्यूनिटी भी बढ़ती है. सो नाउ दे आर एडिंग द विटामिन ए डी इनटू द वेजिटेबल ऑयल. सो दिस इज एक्चुअली एग्जांपल्स. When we are doing the food fortification, so we are using the technology. Actually, this is a process, very difficult process. So something you are adding extra into the another food, तो उसके लिए हमें एक क्राइटेरिया होता है कि वो आप उसके लिए एक प्रोटोकॉल होता है, गाइडलाइन होती है. एवरीबॉडी कैन नॉट डू दैट. तो टेक्नोलॉजी, ये जो फैक्ट्रीज होती हैं उसमें ये सारे कुछ प्रोसेस होता है. तो उसमें क्या होता है, फुलिफिकेशन. अच्छा, अनदर टर्म नाउ द टेक्नोलॉजी, दे आर सेइंग दैट ट्विन फोर्टिफिकेशन ऑफ द सॉल्ट with iodine and iron. Okay, ये देखें now, still that twin fortification of salt with iodine and iron, that is not implemented in Pakistan, while India, Bangladesh, they have already implemented. ये ट्विन का क्या कॉन्सेप्ट है कि अभी देखें जैसे आयोडीन नमक में मिला हुआ है, तो ये कह रहे हैं कि हम आयरन भी ऐड कर दें नमक में, क्योंकि यहाँ पे जो फीमेल्स होती हैं ना डेवलपिंग कंट्रीज में, दे आर सफरिंग फ्रॉम द आयरन डिफिशियंसी एनीमिया. तो आयरन डिफिशियंसी एनीमिया जो फीमेल्स में होती है, एडोलेसेंट गर्ल्स में होती है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी होती है. सो व्हाई वी शुडंट ऐड द आयरन टू द साल्ट. अगर हम साल्ट में ऐड करेंगे, हर घर में ये साल्ट खाया जाएगा, तो उसमें काफ़ी प्रॉब्लम कम हो जाएगा. तो मे बी इन फ्यूचर दे विल implement in Pakistan. Okay, so this is the concept of the food fortification. Definition, examples you should know. ओके, नाउ द क्राइटेरिया क्या होगी जो टेक्नोलॉजी के हवाले से, उसमें हमें ख्याल रखना पड़ता है कि भाई ये जो लोग हैं ये कंज्यूम करें रेगुलरली डेली डाइट बाय द रेलिवेंट सेक्शन. जिस पॉपुलेशन में ये प्रॉब्लम आ रहा है तो वो एक रेगुलरली उसको अडॉप्ट करें. ये जो हमें देखना पड़ेगा कि जितने लोग वो खा रहे हैं कि उनको हैजर्डस एक्सेस टू द हाई कंज्यूमर्स. अगर वो खा रहे हैं तो उसमें उनको हैजर्ड्स या नुकसान तो नहीं हो रहे हैं. सो वी नीड टू मॉनिटर दिस टाइप ऑफ द थिंग्स. अच्छा, वो अगर हम न्यूट्रिएंट एक्स्ट्रा ऐड करें तो वो जो फूड होगा जिसमें हम ऐड करें तो उसमें टेस्ट, स्मेल और अपीयरेंस तो सही रहेगा, और वो कंसिस्टेंसी तो सही रहेगी. अगर ऐसे ना हो कि वो न्यूट्रिएंट ऐड करें तो वो जो प्रेजेंट फूड होगा उसका टेस्ट और स्मेल भी खराब हो जाएगा, तो वो कम्युनिटी उसको अडॉप्ट नहीं करेगी. कास्ट देखनी पड़ेगी, कॉस्ट ऑफ फॉर्टिफिकेशन मस्ट नॉट रेज, क्योंकि अगर हम उसमें न्यूट्रिएंट ऐड करें तो वो उसकी कास्ट तो नहीं बढ़ जाएगी. अगर कास्ट बढ़ जाएगी तो क्या होगा कि पीपल कैन नॉट बाय और द परचेस दैट फूड. एंड जो हमारा मकसद होगा, प्रॉब्लम होगा कि कोई प्रॉब्लम हो तो उसको हम क्लियर करें, तो वो नहीं हो सकेगा.
Okay, so adequate system of surveillance. जैसे ही हम न्यूट्रिएंट ऐड करते हैं, so we need to surveillance, या we need to watch out that food. ऐसे ना हो कि फ्यूचर में समथिंग इज रॉन्ग विद द कम्युनिटी, कि उसको हम थोड़ा चेक करें. Food fortification is the long-term measures for the mitigating a specific problem of malnutrition in the community. ये जो एक long-term measures होते हैं, जो malnutrition के problem होते हैं, उसको control करने के लिए हम उसको यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये आयरन डिफिशियंसी एनीमिया होती है, आयोडीन, दिस इज आल्सो रिलेटेड टू द न्यूट्रिशन प्रॉब्लम. और ये हमारे पास जैसे विटामिन ए डी, यू नो, दे वर एडिंग इन द घी और द वेजिटेबल ऑयल, दैट इज आल्सो न्यूट्रिशन प्रॉब्लम. तो जितने भी माल न्यूट्रिशन के प्रॉब्लम हो रहे हैं ना, वी कैन कंट्रोल थ्रू द फूड फोर्टिफिकेशन. ओके, अनदर टर्म द फूड एडल्टरेशन. एडल्टरेशन का ये कॉन्सेप्ट है कि डेफिनेशन ये है कि जैसे यू नो इन पाकिस्तान दे आर यू नो एडिंग वाटर इनटू द मिल्क. दूध में पानी मिलाते हैं ना, तो ये एडल्टरेशन हो गई, फूड एडल्टरेशन हो गई, उसमें कंटामिनेशन होगी ना फूड की. जो भी हम चीज खा रहे हैं, अगर उसमें कोई ऐसी चीज मिलाई गई है तो उसमें फूड एडल्टरेशन टर्म वी आर यूजिंग, द फूड एडल्टरेशन. Okay, so this is the definition. Adulteration of the food is an age-old problem. It consists of the large number of the practices. ये जो हमारे पास practices हो रही हैं, mixing, ये जो मिल्क, पानी में मिल्क मिलाते हैं, सब्सटीट्यूशन, एक चीज निकाल ली, दूसरी चीज जो लो क्वालिटी वाली उसमें ऐड कर दी. ये ज्यादातर होता है आटा जो हम खाते हैं, व्हीट वाला, फ्लोर वाला, उसमें कोई यूज करते हैं, कोई प्लास्टिक उसको थोड़ा ग्राइंड करके ऐड करते हैं कि वो उसमें मिक्स हो जाए. कंसीलिंग द क्वालिटी, पुटिंग अप द डिकम्पोज फूड फॉर द सेल, डिकम्पोज फूड जो कंटामिनेटेड फूड हो जाता है, मिस ब्रांडिंग, गिविंग फॉल्स लेबल्स, एडिशन ऑफ द टॉक्सिकेंट्स. सो दिस इज द यू नो द प्रैक्टिसेस आर प्रेजेंट इन द पाकिस्तान. अभी हमें यू नो 6 महीने या बिफोर 6 मंथ वी हर्ड यू नो थ्रू द न्यूज़ के भाई ये जो सिंध फूड कंट्रोल अथॉरिटी है, यू नो काफी रिपोर्ट हुए थे, तो 3 या 4 डेथ रिपोर्ट हुई थी कराची से. किसी रेस्टोरेंट पे वो एक फैमिली खाना खा रही थी जिनमें डेथ हो गई थी, खाना खाने के बाद डेथ हो गई थी. तो उसका तो रिजल्ट तो हमें नहीं पता चला, फूड सैंपल भी लिए थे, बट ये कि दैट इज अ कॉमन प्रैक्टिस इन द रेस्टोरेंट्स और द होटल्स. वहाँ पे ये करते हैं कि वो जो डिकम्पोज फूड है उसको सेल भी करते हैं, लो क्वालिटी वाला, उसमें कुछ चीज़ भी ऐड कर लेते हैं. ठीक है, सो अल्टीमेटली यू नो कम्युनिटी विल सफर. तो उसमें काफ़ी डेथ हो जाती है रेस्टोरेंट्स पे. हमारे पास एक्चुअली वी डोंट हैव यू नो प्रॉपर मॉनिटरिंग एंड एवोल्यूशन सिस्टम ऑफ द होटल्स एंड द रेस्टोरेंट्स कि भाई कौन सा खाना है, क्वालिटी सही है सही नहीं है. अल्दो हमारे पास फूड इंस्पेक्टर्स होते हैं सारे. उसमें क्या होगा, डिसएडवांटेज क्या होगा कंज्यूमर को? द फर्स्ट ही इज पेइंग मोर मनी फॉर द फूड ऑफ द लोअर क्वालिटी. Okay, secondly, some form of the adulterations are injurious to the health, even resulting in a death. As for example, ये adulteration of the mustard oil with the argemone oil, causing the epidemic dropsy. ये कंडीशन होती है, डेवलप हो जाती है, इसमें लोअर लिम्स की एडिमा हो जाती है, यू नो, आफ्टर ईटिंग द that kind of the edible oil. Adulteration of the edible oil with that one is a tyrosine phosphate, resulting in paralysis and death. अगर उसमें edible oil में ये TCP ऐड किया हुआ है तो उसमें डेथ भी हो सकती है और पैरालिसिस भी हो सकती है. तो ये जो हमारे पास sometime you know we heard through the newspaper के people they were eating the you know biryani or something, and after eating the suddenly people are died, maybe because of the TCP. Okay, so this one, you know, list the food material are the common adulterant. That one you should, you know, go through. You know, that one I want to share you the cereals such as wheat or rice में. अच्छा, उसमें क्या ये adulterant ऐड करते हैं? इसमें मड ऐड कर सकते हैं, गिट है, ये सोप्टोन बिट्स. तो ये इस तरह से ऐड करते हैं कि जैसे पता ही नहीं चले लोगों को. तो दिस वन इज द कॉमन adulterant. So these are the different you know the food materials. They are aiding or यहाँ contaminating the food. अब ये that is in a milk, they are adding the water. Sometimes you know extraction of the fat, addition of the starch. Ghee, vanaspati is a different, ghee is a different, so they are adding the vanaspati also. So okay, this is the list. At least you should remember 2-3 examples for the food adulteration for the exam purpose.
Okay, so we have the Food Adulteration Act in the Pakistan, but there is no proper implementation. यहाँ पे food inspectors हैं, team हैं, so we don't have proper. We have the system, but we don't have system, proper to implement all things because of the corruption, because of the people, food inspectors, they are getting the easy money. Okay, now the last one topic, I will take the 5 or 6 minutes more to complete my presentation. So the food safety, the what about the, we need to learn about the food safety. Food safety actually that will apply on the restaurants because the homemade food is a very good always, better than the restaurant. So in restaurant, for example, people are eating in the restaurant. So we have so many restaurants, so many people are foodie. So why the food safety is important? Because the loss of the customers and the sale, loss of prestige and reputation, embarrassment, and the lower employee morale. So why food safety is important? Okay, another reason, for example, if we will apply the food safety, then we can prevent and control the foodborne diseases or the foodborne illnesses. Okay, this is the definition. The food safety is an assurance given to the customer that food will not cause any harm when consumed. Okay, so that is the main purpose. Okay, what do you mean by the safe food? Now, actually, the term we are defining about the safe food and the safe water also. Okay, the food which is free from bacteria, virus, chemicals, and the foreign particles. So now you can imagine if you are visiting the restaurant, if you are eating something on the restaurant, are you eating the safe food or not? So the safe food is free from the bacteria, virus, chemicals, and the foreign particles. Similarly, that definition will apply on the safe water, wholesome water. तो उसमें भी ये बैक्टीरिया, वायरस, केमिकल्स और फॉरेन पार्टिकल्स नहीं होनी चाहिए. Okay, so now these are the bacteria, viruses, chemicals, and the foreign particles. Okay, the pictures are showing the microorganisms. Okay, how did food get affected? How food is acquiring or getting the infection through the cross contamination. Okay, the transfer of bacteria from one contaminated food to the another uncontaminated food. Definitely, food is acquiring the infection from the different things by the cross contamination. Okay, so three ways of the cross contamination. One is the physical, chemical, and the microbiological contamination. Physical, जैसे कोई हाथ बात आपके साफ नहीं हो and you are touching the food. Okay, so the physical contamination, take place through the glass pieces, iron, nails, small paper, hair, stone, thread, or insects. So that will, contaminate food physically. Chemical contamination take place through the detergent, finger with nail paint, pesticide, soap. Sometimes, we are, washing hands with soap and immediately we are touching the food. That is not, proper way. So we need to dry the hands. After that, we supposed to touch the food. So that come under the category of chemical contamination. Okay, that one is the microbiological means the bacteria, virus, or insect eggs that will contaminate the food. So how we will control the physical contamination? Everybody know everybody is doing the personal hygiene. Personal hygiene, care of the body. Okay, so the short trimmed hairs, especially the females, supposed to when they are cooking. So short trimmed hairs, wearing caps, no jewelry at work, any kind of the thread in your body. So that is related to the personal hygiene. Maintain food surrounding area, keep kitchen area clean. Do not leave any piece of the plastic from milk packet, paper from tea bags, which can go into the food. Maintain the devices, equipments, पेस्ट मैनेजमेंट जैसे नहीं होते इंसेक्ट्स होते हैं अराउंड द किचन. सो उसका हमें स्प्रे करना चाहिए. Control in chemical contamination. Hand wash properly to ensure no soap, cosmetics, creams go into the food. No cleaning agent near food. Keeping cleaning chemicals organizing away from the food. Okay, controlling microbiological contamination. Hand wash free from germs. Keep food out of the danger zone. अच्छा, danger zone क्या होता है? Basically we are putting the food, leftover food into the refrigerator, so we need to see the temperature. अगर ये danger zone is a temperature range from 5 to 65.
डिग्री सेल्सियस, ये डेंजर जोन टेम्परेचर है, इसमें फूड नहीं होना चाहिए। यहाँ तो हम इसलिए क्या करते हैं कि जो हमारा टेम्परेचर होता है ज़्यादातर जो फ्रिज रेफ्रिजरेटर में 2 to 8 होता है, तो वो दैट इज नॉट, अगर वो 5 से ऊपर जाएगा, 8 से अगर ऊपर जाएगा तो वो कंटामिनेशन हो जाएगी, बैक्टीरियल कंटामिनेशन की। तो इसलिए ज़्यादा उसको टेम्परेचर को कम रखें, 5 से कम रखें, 2 to 5 रखें या 2 to 8 रखें। Okay, so the hot food, okay, that one, you can see the keep frozen food frozen, keep cold food cold, okay, keep hot food hot. Okay, this is the definition of the bacteria, E. coli and Salmonella, they cause the food contamination commonly. E. coli and the Salmonella cause the typhoid. Okay, from where we are getting bacteria? Okay, human, animal, water, air, food, devices, and the carriers. So, from where these are the sources of the bacteria. I think that one already, the contamination occurred through the food, water, devices, animals. So, these are the sources of the bacteria. How we can control the bacteria? Okay, that one through, the danger temperature. Okay. Other thing is keep food out of the danger zone, keep food area clean and the dry. So these are the measures we need to take to control the bacteria. Okay, so the 4 steps to the food safety. Okay, this is the last slide. Okay, cleanness, separate the food, the raw food and the cooked food we need to put separately into the refrigerator. Cook proper cooking, on the temperature and the chilling. Okay, thank you so much. So that's all. So if you have any question or query, then you can discuss with me when you are here. Okay, thank you so much.